Hello everyone. On behalf of Chetan Bharat Learning, this is Dr. Vikas Kumar. So, I believe we have discussed quite a few reading comprehension passages so far. And I really hope that you've been able to understand most of them and in fact all of them. And the practice that you've done recently must have helped you improve a lot, right? So let's continue. It is practice, practice, and practice, my dear friends. CLAT is not far off. It is just about another, let's say 15 days or so, right? And you need to practice. But tell you what, don't panic. Don't take any undue pressure. Only and only practice. And practice very hard for the next, 10, 12 days or so. Then give yourself a break so that when you approach the exam, when you enter the examination hall, you are absolutely fresh. Great. Let's begin. Last winter, I hope you are able to watch it clearly. I happened to be in one of the remotest corners of India, जहाँ पहुँचना बहुत आसान नहीं है, in a place called Sankari in Uttarakhand. Sankari is close to Yamunotri, the origin of river Yamuna. I was visiting Sankari on an invitation. कहाँ से? From the United Nations Development Program to meet and orient people from 5 villages into alternative employment. और क्या-क्या employment के chances या scope या possibilities हो सकती हैं. Opportunities since their traditional occupation, agro-pastoralism, had been deeply affected by the region falling under the Govind Pashu Vihar, एक protected high altitude forest. बहुत ऊंचाई पर वो situated है. Now under the UNDP's Snow Leopard Conservation Program. जैसे हम लोग ऊपर की तरफ गए, as we drove up the narrow serpentine roads, right? We saw hydroelectric projects in what was no man's land until a few years ago. पहाड़ों के roads कैसे होते हैं? सांप के जैसी shape, right? And they look beautiful. I was completely shocked by the progress the place made. देखिए पहले क्या कहा है इन्होंने? One of the remotest corners. और यहाँ क्या कह रहे हैं? I was completely shocked by the progress made by the place. With the snow-capped ranges, क्योंकि जहाँ पर snow होती है या ज़्यादा रहती है, सर्दी होती है, इस तरह के roads होते हैं, hills होते हैं, वहाँ पर to make progress is not that easy. And development is quite a task there. So, capped range is almost obscured, बहुत मुश्किल बना दिया, by a number of hotels, cafes and guest houses that have come up in the last 5 years. So इतना सब कुछ हो गया और ये उनके लिए एक बहुत pleasant surprise है. He says that इतने remote area में इस तरह का development expected नहीं है और आसान भी नहीं है. The region, उन्होंने मुझे बताया, had recently been discovered by adventure tourism companies as a trekking destination. तो excuse me, उन्हें बताया गया कि जो रीजन है ना, recently it has been discovered, rather had been discovered by adventure tourism companies. कुछ adventure tourism companies हैं जो लोगों को tourism के लिए यहाँ लेकर आती हैं और ट्रैकिंग के लिए लेकर आते हैं एज अ ट्रैकिंग डेस्टिनेशन. आप भी अगर कभी ट्रैकिंग पर गए हो या जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली पहाड़ों में ही जाएंगे और मुश्किल जगह होती है वो. फॉर पॉपुलर विंटर ट्रैक्स सच एज केदारनाथ एंड हरी की दून, आई सॉ लार्ज ग्रुप्स ऑफ यंग पीपल डिसेंडिंग ऑन संकरी, जब अदर रीजन्स लाइक लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश वुड बी इफेक्टिवली क्लोज्ड ड्यू टू, तो ये प्रॉबेबली उत्तराखंड की बात हो रही है, यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं. वो कह रहे हैं कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश बंद होंगे एक्सेसिव स्नो की वजह से, जो हो भी जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं हिमाचल में अक्सर. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द संकरी ट्रेल्स themselves are largely free of snow. तो वहां पर कहते हैं कि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री होते हैं वो.
स्नो से एंड देयरफॉर ईजियर टू क्लाइंब, तो आसान है वहां पर चढ़ना. While the peaks offer fantastic Himalayan panoramas and ample opportunity, बहुत सुंदर दृश्य panorama and ample enough opportunity for the kind of adventure one might boast of on social media. इस लाइन का मतलब है कि वो एक्चुअली बिल्कुल ऐसी जगह है जहां पर जाकर आप अगर फोटो क्लिक करके आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे डाल दें या फेसबुक पे डाल दें तो लोगों को एक्चुअली अच्छा लगेगा देखकर, और आप यू कैन बोस्ट ऑफ सम हैविंग डन समथिंग डिफरेंट. ऐसी जगह है. ये जो ऑपरेटर्स हैं दे हैव स्कैंट रिगार्ड फॉर लोकल कल्चरल, स्कैंट बहुत ज्यादा नहीं, कल्चरल सेंसिबिलिटीज उसके लिए और द एनवायरमेंट, एंड हैव सेट अप लार्ज फैसिलिटीज इन कल्यूजन जॉइन होकर विद द पावर्स that be in what is essentially a protected tribal area. So उनके कल्चर में अब ऑथर एंटर कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके कल्चर को लेकर स्कैंट ही सेंसिबिलिटीज हैं. The employment and revenues generated by brisk adventure tourism is going entirely to these companies and their experts brought in from the bigger cities. So थोड़ा सा नेगेटिव टोन हो रही है. अभी तक तो ब्यूटी ऑफ हिल्स उत्तराखंड वगैरह 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 उसकी बात हो रही थी, तो अब कह रहे हैं कि जो ऑपरेटर्स है ना इनको ज्यादा रिगार्ड नहीं है लोकल कल्चरल सेंसिबिलिटीज के लिए या उनके एनवायरनमेंट के लिए. और वो कह रहे हैं कि जो ज्यादातर पैसा उस बनता है ना रेवेन्यू जनरेटेड बाय ब्रिस्क एडवेंचर टूरिज्म, वो किसके पास जा रहा है? लोकल्स के पास तो जा ही नहीं रहा. एंटायरली टू दीज कंपनीज, जिन्होंने कौन सी कंपनीज, देखिए एडवेंचर कंपनीज का इन्होंने नाम लिया होगा, ये एडवेंचर टूरिज्म कंपनीज, यही लोग एक्सक्यूज मी, एंटायरली टू दीज कंपनीज एंड देयर एक्सपर्ट्स ब्रॉट इन फ्रॉम द बिगर सिटीज. तो जो बड़ी सिटी से बुलाए गए हैं उन्हीं के पास उनका ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो जा रहा है. राइट. सो थैंक्स टू दिस असॉल्ट ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड कल्चर, locals are left picking up the crumbs as bearers and porters while others maximize profit. Thanks वो एक idiomatic expression है, thanks to मतलब reason क्या है ये कहने का. So इसी assault का असर ये है, assault on their property, क्योंकि property तो उन्हीं की है, culture उन्हीं का है, जगह उन्हीं की है. उनकी जो property है उस पर ऐसा assault किया गया है कि उसका रिजल्ट क्या है कि locals गरीब होते जा रहे हैं, उनके पास इतने पैसे हैं नहीं, they're forced to pick up the crumbs and bearers, वो जैसे रैग पिकर्स भी होते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है. एक और फेमिलियर टेल ऑफ इंटरनेशनल colonialism, some would say. Why I chose to describe it as internal colonialism. colonialism क्या होता है? जब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाके उसको सब्जुगेट करते हैं, रूल करने लगते हैं, उसको कलोनियलिज्म कहते हैं. ये इंटरनल क्यों है? क्योंकि भारत में ही भारत के ही लोग कर रहे हैं. Some would say. Okay, so it is because post independence, now we are independent, Uttarakhand emerged as a state only in the year 2000. हाँ, ये बना ही 2000 में है. Its progress hampered by the oppressive decision making from far away Lucknow by then. Why Lucknow? Because पहले it used to be उत्तर प्रदेश, उसमें से उत्तराखंड बना है ना? तो उसका प्रोग्रेस नेचुरली अब होने लगा है, पहले तो नहीं था ही नहीं, 2000 में तो बना है. However, when the struggle seemed to be finally over, another class of rulers took over the newly formed state. However, जब स्ट्रगल सीम टू बी उसके बनाने के लिए खत्म हुआ तो दूसरे रूलर्स आ गए. पहले लखनऊ वाले रूलर्स रूल कर रहे थे, अब दूसरे रूलर्स आ गए नई बनी स्टेट में रूल करने के लिए, इवन मोर कॉलोनियल एंड इनसेंसिटिव देन द अर्लियर मास्टर्स. दीज टर्न्ड आउट टू बी इवन मोर कॉलोनियल एंड इनसेंसिटिव, completely driven by their own commercial interests
उनको और कोई इंटरेस्ट तो थे नहीं, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट ही थे जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थे, एंड लैक ऑफ आइडियाज. जो गैप था बिटवीन द पीपल वांट एंड व्हाट दे डिलीवर इज मच वाइडर देन द यमुना गॉर्जेस. तो वो गैप बढ़ता गया, जो लोग कह रहे हैं और उनको जो मिल रहा है उसमें. A year on, news from Sankiri is not very heartening. बहुत अच्छी खबर नहीं है. A road has been approved right up to Osla. Okay. The road not even notified as a forest road, but a Prime Minister Gram Sadak Yojana project will cut right through the protected zones. पहले जो protected zones हुआ करते थे, and bring in hordes of selfie obsessed thrill seekers. So जो protected roads थे जिसपे सब जा नहीं सकते थे, वहां से वो रास्ता निकलेगा तो ये नेचुरल है टूरिज्म बढ़ेगा. मेरे आपके जैसे और कई लोग जो हैं जो टूरिस्ट हैं वो जाएंगे. सेल्फी ऑब्सेस्ड जो हम वहां खड़े होकर सेल्फीज लेंगे. द रिच एंड द पावरफुल फ्रॉम दिल्ली, इंपॉर्टेंट लाइन है. द रिच एंड द पावरफुल फ्रॉम दिल्ली मीनवाइल हैव ऑलरेडी गॉन अहेड एंड सिक्योर्ड लैंड डील्स. तो जो रिच है और पावरफुल है दिल्ली से, उन्होंने ऑलरेडी वहां पर लैंड सिक्योर कर ली है विद द हेल्पलेस विलेजेस टू सेट अप देयर रिजॉर्ट्स. वहाँ के गरीब से विलेजेस हैं, कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, खुश भी हो गए वो कि चलो थोड़े से पैसे मिल गए. रिच लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें खरीद ली हैं कि ताकि वो अपने रिजॉर्ट्स बना सकें, बिकॉज इट इज़ ऑल कमर्शलाइज्ड. राइट. Why was Sankari a better choice for climbers than Himalayas and Ladakh? Sankari had better employment opportunities? नहीं. Sankari had hydroelectric projects? नहीं. बर्फ की बात उन्होंने एक जगह की थी. Yes, being free of snow. ये directly given है इसका आंसर. All right, I think we saw it somewhere here. Largely free of snow. नहीं. All right, ये रहा. ये देखिए वहां पे होता है और यहां पर the area is largely free of snow. Why, according to the passage, was the author shocked on visiting Sankari? As Sankari had, उनको ये था कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, राइट, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. I was completely shocked by the progress the place made. Gone through a great change. Simple. बहुत easy answer. Easy question है in fact. How, according to the author, the locals were at a loss? उन्होंने कहा है कि लोकल्स को इसलिए लॉस हुआ क्योंकि जो कंपनीज आ रही हैं वो तो प्रॉफिट ले रही हैं, लेकिन लोकल्स के पास ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है. वापस चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ था. ये रहा. While others maximize profits, locals are left picking up the crumbs. So टुकड़े उठाने पर मजबूर हो रहे हैं लोग. So C. Right. Next one. Which of the following is the most suitable title? Title वो होता है जो central idea को सबसे अच्छे से explain करता है. So the impact of development on Sankari, okay, the adventurous hub Sankari, the Caesar of Sankari, जो companies ने किया है, ये करेक्ट आंसर है. बिकॉज द पैसेज, देखिए जब वो कहते हैं ना a year on news is not very heartening, he is not happy with the Caesar of Sankari, कि वो जो एरिया है वो दूसरे लोगों ने ले लिया है. इंटरनल जो कॉलोनियलिज्म भी कहा है उन्होंने से. नेक्स्ट वन. चलिए, व्हाट डज द वर्ड ब्रिस्क एज यूज्ड इन द पैसेज मीन? ब्रिस्क का मतलब ही होता है तेज, एक्टिव, एनर्जेटिक. ये आंसर. लेथार्जिक इसका ऑपोजिट होता है. ग्लूमी और इनएक्टिव आपको मालूम है, ग्लूमी सैड एंड एक्टिव इज पैसिव. रेकलेस होता है रेस्टलेस, जो फटाफट कर दे बिना सोचे समझे, जो इस तरह कोई भी काम करे. राइट. सो दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट पैसेज. The 20th century witnessed the birth of modern family planning and its effects on the fertility of hundreds of millions of couples around the world. पूरी दुनिया में ही population का एक rise रहा है, तो ये चीजें होना ही था. In 79, चाइना ने formally initiate किया one of the world's strictest
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, शायद दुनिया में सबसे स्ट्रिक्ट. द वन चाइल्ड पॉलिसी, डिस्पाइट इट्स ऑब्वियस सिग्निफिकेंस, इसके बावजूद कि ये बहुत सिग्निफिकेंट था, पॉलिसी अंडर स्टडीड रही. डेटा लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस थी डेटा को लेकर, और एक लैक ऑफ डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन जो नहीं हुआ, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ. दीज हैव हिंडर्ड रिसर्चर्स, क्योंकि जब डेटा था ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही नहीं, तो उस पर रिसर्च कैसे होता. However, ऐसा लगता है that it is clear that policy has affected चाइना की इकोनॉमी, उसका इफेक्ट नजर आता है, एंड सोसाइटी in ways that extend well beyond its fertility rate. तो सिर्फ फर्टिलिटी पर नहीं, इकोनॉमी और सोसाइटी पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा. देखते हैं कैसे. Now, due to large variation in how the one-child policy was implemented across regions and ethnicities, researchers एक काम कर पाए. उन्होंने ना एक्सप्लॉइट किया है नेचुरल वेरिएशन इन देयर एनालिसिस, अलग अलग एनालिसिस प्लूरल, which makes empirical results reliable. उससे ये जो empirical जो results है ना, ये reliable से तो नजर आते ही. Strictness of policy implementation is associated with promotion incentives for the local leaders. Fun. The one-child policy काफी हद तक significantly या considerably at least curbed population growth. Population को तो रोका उस policy ने. Though there is no consensus on the magnitude, जरूर रोका, but to what extent is a matter of debate. Some people say that it was very effective. Some people say that it was just partly effective. Some people say that it was, the impact was almost negligible. So there is a debate. There is no consensus, right? Under the policy, households ने क्या किया? They tried to have additional children without breaking the law. Law भी नहीं तोड़ा, additional children रखे उन्होंने. Some unintended consequences include higher reported rates of twin births. So, कुछ unintended consequences include unintended results, twin births, and more and minority marriages. Minority marriages, the overall rate of natural increase, जो overall rate है natural increase का population, the difference between the birth rate and the death rate dwindled. तो वो change हुआ, कभी हटा, कम भी हुआ, कम हो गया, right? Now the Chinese government estimated that some 400 million births were prevented by the policy. तो चाइना की गवर्नमेंट कहती है कि 400 मिलियन बर्थ्स रोक दिए गए इस पॉलिसी के द्वारा. कुछ एनालिस्ट्स डिस्प्यूट करते हैं इस रिजल्ट को. As sons were generally preferred over daughters, how disappointing. The overall sex ratio in China became skewed towards males. तो वो कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स अग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग प्रेफर्ड मेल्स, और मेल जो बच्चे थे उनकी रेशियो तो बढ़ गई. In 2016, there were these many million more men than women. Because of the preference for sons, there was a rise in the number of abortions. देखिए ये social evils यही नहीं है, बाहर भी हैं. Now the number of female babies killed, abandoned or placed in orphanages. How sad. अनाथ आश्रम में रख देना उनको. Increased as a result of the policy. इससे वो इंक्रीज हो गया क्योंकि उन्होंने एक ही बच्चा दिखाना है, तो वो एक बच्चा मेल होना चाहिए. पैदा हुए हैं बच्चे, फीमेल्स को तो रखा है वो कहीं को भी. Incentives were offered to families complying with the policy. गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स ऑफर किए थे उन फैमिलीज को जिन्होंने इस पॉलिसी के साथ कंप्लाई किया, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पर्क्स एंड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस. ये सरकार ने उनको एज इंसेंटिव्स ऑफर किया. अब millions of Chinese parents had to endure strict enforcement methods of the policy, including forced
स्टेरिलाइजेशन, जिससे इनफर्टाइल हो जाते हैं जबरदस्ती, एंड फोर्स्ड अबॉर्शंस। अब ये कोशिश करा जा रहा था ना कि एक ही बच्चा शो करें हम, वो हमारे पास भी हो, और हमारे पास रहेगा तो वो मेल हो, हमें नौकरी भी मिल जाएगी, मेल बच्चा भी रह गया, और हमें सरकार से दूसरे बेनिफिट्स भी मिल गए। In families that already had one child, the births of additional children in violation of the one child policy, violation है वो, लेकिन उन्होंने फिर क्या कि हमने तो जी एक ही बच्चा करना है, क्योंकि पहले वाले शायद रजिस्टर्ड नहीं है, बाद वाला रजिस्टर करा दिया, were often undocumented, या फिर सेकंड वाले को नहीं कराया, so leading to many problems later on for those children as they struggle to receive an education or find work। अब जो अनडॉक्यूमेंटेड बच्चा है उसके आगे सर्टिफिकेट्स बनने में दिक्कत हुई, ना एजुकेशन मिल रही, ना स्कूल में एडमिशन हो रहा है, ना काम मिल रहा है। Even after the one child policy was rescinded, China's birth and fertility rates remained low। हालांकि ये वायलेट हुआ है, उसके बावजूद चाइना का बर्थ रेट remained low, leaving the country with a population that was aging too rapidly as well as a shrinking workforce। तो अब दो प्रॉब्लम्स हो गई कि जो पॉपुलेशन ऑलरेडी है वो एज भी हो रही है उसकी, और वर्कफोर्स भी कम हो रहा है। China's one child policy is possibly the largest social experiment in the history of the human race। शायद ह्यूमन रेस की हिस्ट्री में लार्जेस्ट सोशल एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। The behavior responses to the policy offered important insights, काफी important एक वो ज्ञान मिलता है about for other studies in labor, development and public economics। अभी तक रिसर्चर्स ने फाइंड किया है that a series of outcomes, results such as lower fertility rate, unbalanced sex ratio at birth are potentially associated with the policy। However, the answers to many important questions are far from satisfactory। बहुत satisfactory तो नहीं था, and some have received little attention। कुछ पर attention दिया ही नहीं गया। चलें, why according to the passage had the Chinese policy not been featured and documented properly? As this policy was world's strictest family, so what? Because it affected China, the country concealed the data? No. Yes, due to the unavailability of the adequate specifics and figures। Let's go back। ये देखिए, lack of detailed documentation। We've done this, yeah। How did the Chinese government attract its citizens to follow the one-child policy? By providing incentives to leaders, not to leaders, by offering certain privileges and incentives to the people who practiced it। Simple, quite easy। Which of the following represents the major pitfall of the policy even after it was abolished? So what is pitfall? Which of the following represents the major pitfall? Pitfall is like hidden danger। pitfall भाई ये है, even after it was abolished, depletion of workforce, एज नहीं बढ़ रहा था, वहां उन्होंने मेंशन किया है कि एज बढ़ रही है लोगों की और वर्कफोर्स अब कम हो रहा है। China's birth this aging, last line देखिए, quite clearly given। चलिए, which of the following summarizes the passage? Total summary जो है, non availability of the detailed documentation, ये तो passing reference है। The impact of the Chinese biggest policy, no। biggest नहीं हमें पता, one of the biggest। The drawbacks of the world's sexist policy, no। not only the drawbacks, effects of China's one child policy, यही है। What does the word dwindled as used in the passage mean? Decline, हाँ, कम हो जाना। उसने कहा था ना कि वो dwindle हो गया था जो population था, तो decline ही है उसका मतलब। चलिए, next one। Gurgling infants might seem like no match for artificial intelligence। They are terrible at labeling images, hopeless at mining text, and awful at video games। So what is gurgling? एक छोटे बच्चे की contented सी साउंड को कहते हैं।
So then again, babies can do things beyond the reach of any. शायद बच्चे ये सब अच्छा नहीं कर सके, माइनिंग अच्छी नहीं कर सके, टेक्स्ट अच्छा नहीं बना सके, ऑफुल एट वीडियो गेम्स नहीं अच्छे से बना सके या देख सके, खेल सके. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरों से बहुत अच्छी करती हैं. By just a few months old, they have begun to grasp, grip, catch the foundations of language. जो बहुत कमाल की बात है. Such as grammar. बड़े होके भी हम स्ट्रगल करते हैं. And they've started to understand how the physical world works, how to adapt to unfamiliar situations. उनके लिए तो सब कुछ unfamiliar है. देखिए, सबसे ज्यादा जो एडजस्ट करने वाला अगर कोई इंसान है तो वो छोटा बच्चा ही होता है. Yet, even experts को समझ नहीं आता precisely how babies or adults for that matter learn. Learning कैसे होती है? That gap points to a puzzle at the heart of modern artificial intelligence. अब modern artificial intelligence को ही देख लीजिए. We are not sure what to aim for. हमें नहीं मालूम aim क्या है. Consider one of the most impressive examples of artificial intelligence. AlphaZero, a program that plays board games with superhuman skill. Superhuman skill के साथ वो गेम खेलते हैं. यही तो artificial intelligence है. After playing thousands of games against itself at hyperspeed and learning from winning positions, AlphaZero ने independently discover किया several famous chess strategies. Sorry. And even invented new strategies. ऐसा डेफिनेटली लगता है लाइक अ मशीन एक्लिप्सिंग, कवर कर देना ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज, हमारी समझने की एबिलिटीज को वो जैसे ग्रहण लगा दिया है उसने. बट AlphaZero नीड्स टू प्ले मिलियंस मोर गेम्स देन अ पर्सन ड्यूरिंग प्रैक्टिस टू लर्न अ गेम. लेकिन इसको बहुत गेम्स खेलने की जरूरत है बिफोर इट कैन लर्न अ गेम. मोस्ट टेलिंगली, it cannot take what it has learned from the game and apply it to another area. Human beings वो कर सकते हैं, artificial intelligence वो नहीं कर सकती. यहाँ से एक जगह सीखा, दूसरी जगह अप्लाई कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ हम में हो सकती है या एनिमल्स में भी. To some members of artificial intelligence priesthood, that calls for a new approach. Excuse me. Human intelligence special है because of its adaptability. Absolutely correct. Its power to generalize to never seen before situations. हम जो बिल्कुल नई situations हैं उनको भी generalize कर लेते हैं. Says Charlotte, a well-known artificial intelligence engineer, creator of Keras. एक widely used framework है जो deep learning के लिए इस्तेमाल होता है. In a November research paper, उन्होंने आर्ग्यू किया था that it is misguided to measure machine की intelligence सिर्फ according to its skills at specific tasks. Humans do not start out with skills. Skills के साथ वो शुरू नहीं करते, वो शुरू करते हैं with a ability, broad ability. टू अक्वायर स्किल्स होती नहीं उनमें एबिलिटी होती है टू अक्वायर स्किल्स. He says, what a strong human chess player is demonstrating is not the ability to play chess per se, but the potential to acquire any task of a similar activity. That's a very different capability. तभी तो ह्यूमन बींग्स के पास ये एबिलिटी है कि वो एक जगह की लर्निंग को दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं. ये क्लियर नहीं है अभी तक हाउ ह्यूमंस सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. वो ये सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं. लेकिन स्पेल कीज वर्क ऑफर्स अ फ्यू क्लूज. स्पेल की का काम थोड़ा क्लूज ऑफर जरूर करता है. फॉर वन थिंग, वो सजेस्ट करता है दैट ह्यूमंस आर बोर्न विद एन इनेट एबिलिटी, बाय बर्थ एबिलिटी, क्विकली लर्न करने के लिए कुछ चीजें, टू क्विकली लर्न सर्टेन थिंग्स. जैसे कि एक स्माइल का क्या मतलब होता है, या क्या होता है जब आप कोई चीज ड्रॉप कर जाते हो,
जो आपका और मेरा, फॉर एग्जाम्पल एक नेचुरल रिएक्शन होता है जब आंख के पास कुछ आता है, हम ब्लिंक करते हैं ना, आंख पलक झपकते हैं, वो हमें किसने सिखाया? किसी ने नहीं. इट ऑल्सो सजेस्ट वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर, करेक्ट? एक रिसेंट एक्सपेरिमेंट ने शो किया था 3 महीने ओल्ड अपेयर, 3 महीने के बच्चे पजल लगते हैं जब कोई भी grabs a ball in an inefficient way, suggesting that they already appreciate that people cause changes in the environment. Absolutely right. Even the most sophisticated and powerful artificial intelligence systems on the market cannot grasp such subjects. एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, फॉर एग्जाम्पल, वो इंट्यूट नहीं कर सकती कॉमन सेंस से क्या होगा अगर एक ट्रक स्पिल्स इट्स लोड, उसका जो भी लोड है वो गिरा दे तो क्या होगा. एक इंसान कर सकता है. सम साइंटिस्ट्स बिलीव, कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं, just as evolution has given the human brain certain capabilities, absolutely, artificial intelligence programs will need a basic understanding of physics and psychology. अगर उनको acquire करना है और use करना है knowledge एक छोटे बच्चे की तरह. And to apply this knowledge to new situations, he says, they will need to learn in new ways. नए तरीकों से उनको सीखना भी पड़ेगा. For example, by drawing causal inferences draw करने पड़ेंगे rather than simply finding patterns. At some point, if you are intelligent, you realize maybe there is something else out there, he says. Beautiful. Very captivating passage. How, according to the author, is Alpha Zero different from a human? वो कहते हैं कि Alpha Zero needs to play board games multiple times to learn and cannot apply its learning in other streams. Human beings के बारे में यही तो कहा है उन्होंने, सी कि उनमें ability होती है to apply that knowledge somewhere else also. Which of the following represents spell case work regarding the learning of humans and AI? Just as evolution has given the human brain, no. Humans are naturally gifted. Yes. वही पलक झपकने वाली चीज. According to the passage, how adaptability makes human intelligence special? As humans have the natural ability to learn, no. He doesn't say that. As the machines have hyperspeed, no. As humans have the ability to improvise, yes. जो भी सीखा है according to the situation. Generalize लिखा था ना, unprecedented situation में भी हम generalize कर सकते हैं. Which of the following summarizes the passage? The scientific approach towards artificial intelligence. Okay, incomplete है ये. The impact of artificial intelligence, ना ये तो डिस्कस ही नहीं किया ज्यादा. The disadvantages, it's not the disadvantages, it is the difference that is brought out. Human intelligence is more intelligent, absolutely. What does the word cognitive as used in the passage mean? समझ जाने की ability, perceive करने की ability, comparing, no. Comprehension of anything, no. Yeah, process of knowing or perceiving. Well, that's it for today. I hope ये सारे questions आपको clearly समझ आ गए होंगे. बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक जो पढ़ लिया है, please read it. Please keep practicing. Our efforts will be absolute waste if you don't practice hard. Take care. Bye bye.